Very good evening to all of you and welcome to LegalEdge. So आज के सेशन में हम MHCET के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देयर विल बी अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे हम प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के सॉल्व करेंगे. सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस हम लीगल एप्टीट्यूड के भी सॉल्व करेंगे बिकॉज ओलेट एग्जामिनेशन में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ओलेट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड वीडियो एंड करते वक्त मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ओलेट पर्पसेस के लिए या एमएचसीटी के पर्पसेस के लिए हमें कौन कौन सी चीजें लीगल एप्टीट्यूड में स्पेसिफिकली ध्यान से याद करनी है. सो हम दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ आज के सेशन को हैंडल करेंगे. पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किए किस तरीके से जाए, उनको अप्रोच किस तरीके से किया जाए या किन चीजों को ध्यान में रख के हमें आंसर करना होता है. एंड सेकेंडली लीगल एप्टीट्यूड को हम किस तरीके से कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so let's start with our first question. So I'll explain you the principle and the facts. फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. So the principle of the first question is, on a petition made by either the husband or wife, a decree of divorce may be granted if the other party has treated the petitioner with cruelty. Under the Hindu Marriage Act 1955, treating a spouse with cruelty is a valid ground of divorce, and cruelty is an intentional crime. ठीक है, तो प्रिंसिपल बेसिकली हमसे कह रहा है कि भाई on the presentation of a petition by either the wife or the husband, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे आपको डिवोर्स दिया जा सकता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. एंड क्रूअल्टी एक इंटेंशनल क्राइम है, आप उसको इंटेंशन के साथ करते हो. ठीक है, द फैक्ट्स आर Raj and Riya are the husband and wife respectively. On a Sunday evening, they went to DB Mall. While they were crossing the road, Raj did not look sideways and moved forward. Riya saw a fast moving car approaching towards Raj and she moved him towards her. Raj was saved. Riya slapped Raj because of the sudden anger caused by the incident, and now Raj is seeking divorce. What do you think? What should be the correct answer over here? इंसिडेंट ये है कि वो डीबी मॉल जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे. राज ने ध्यान नहीं दिया कि रोड क्रॉस करते वक्त वहां से एक फास्ट मूविंग कार आ रही. रिया ने उसको पीछे की तरफ खींच के उसको बचा लिया. बट रिया ने उस सडन एंगर में कि राज ध्यान नहीं दे रहा है रोड पे, उसने उसको स्लैप कर दिया. नाउ राज इज क्लेमिंग फॉर डिवोर्स. विल ही सक्सीड? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? विल इट बी ऑप्शन ए, बी, सी और डी? Come on, tell me in the comment box. What should be the correct answer? The correct answer over here will be option C, that he will fail. Divorce cannot be filed on this ground as it was not cruelty. अब रिया ने राज को थप्पड़ तो मारा था, बट प्रिंसिपल हमसे कह रहा था कि वो एक इंटेंशनल क्राइम है ना. और क्रूअल्टी मतलब आप किसी को जानबूझ के क्रूअली उसके साथ बिहेव कर रहे हो या आप उसको परेशान कर रहे हो और इंटेंशनली कर रहे हो. यहां फैक्चुअल सिचुएशन ने क्लियर कर दिया था कि भाई कोई इंटेंशनल क्राइम नहीं हुआ है. वो इंसिडेंट की वजह से उस वक्त उसने सडन एंगर में उसको थप्पड़ मारा. सो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि राज के साथ क्रूअल्टी होगी. एंड therefore the correct answer will be option C, that he will fail and divorce cannot be filed on this ground as it was not cruelty. So भाई C जिसने यहाँ पे मार्क किया था, the correct answer is option C only. चलो, let's move to the next question. And the next question is, the principle given to us is, a trademark is a symbol by which a particular product of a person is known in the market if it is distinctively different. तो प्रिंसिपल ने क्या कहा कि प्रिंसिपल भाई ट्रेडमार्क मतलब ट्रेडमार्क एक प्रोडक्ट पे मिलता है, किसी पर्सन के प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी वजह से लोग उसके प्रोडक्ट को मार्केट में जानते हैं. बट वन थिंग इज एसेंशियल, दैट इट शुड बी डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट, अलग होना चाहिए. ठीक. फैक्ट्स आर, मिस्टर सागर गैरे इज अ छोला भटूरा सेलर एंड इज फेमस फॉर डिलीशियस टेस्ट ऑफ हिज छोला भटूरा इन भोपाल. He started making bhatura stuffed with
mashed potatoes. He called it Gary's special. It was a big hit in the market. Another seller, Gopal's Food, started making the chola bhaturas exactly same as Gary's special. He used the same method for making chola bhaturas. Mr. Gare files a case against Gopal's for copying his trademark. तो भाई यहाँ पे फैक्ट में क्या हुआ? मिस्टर सागर गहरे छोला भटूरा बताते थे और उन्होंने मैश्ड पोटैटो के साथ भटूरा बनाने शुरू कर दिए एंड वो गैरे स्पेशल नाम से इसको बेचते थे. सेम चीज मिस्टर गोपाल ने करना शुरू कर दी. नाउ मिस्टर गैरे इज क्लेमिंग इट एज अ ट्रेडमार्क वायलेशन. व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? ए, बी, सी या डी? क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? देखो, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट गैरी विल फेल एज हिज डिश वाज नॉट डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट. डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट जो यहां पे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिफरेंस आया है आपके प्रोडक्ट में. भटूरा में मैश्ड पोटैटो डाल देना उसको कहीं से भी डिफरेंट नहीं बना देता है. ठीक है, वो डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने भटूरा में कुछ चेंज कर दिया हो. सो क्योंकि प्रोडक्ट खुद में डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट नहीं था, इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट गैरे विल फेल एज हिज डिश वाज नॉट डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट. सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन ए. अभिनव, डिफरेंट है बट डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट होना चाहिए, है ना? डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट का मतलब होता है कि भाई कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग सा ही चेंज कर दिया. वैसा कुछ नहीं चेंज किया ना भाई. खाने की किसी डिश में, किसी भी डिश में मैश्ड पोटैटो मिला देना कुछ अलग नहीं बना देता उस प्रोडक्ट को. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली. ठीक, चलो, let's move to the next question. The next question says the principle is a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reasons to believe to be likely to cause it. अब यहाँ पे एक अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज प्रिंसिपल में दी हुई है कि पर्सन एक वॉलंटरली किसी एक्ट को वॉलंटरली कब करता है. ठीक है, तो पहली चीज कि उसका इंटेंशन हो कि उसको वो एक्ट कमिट करना है. ठीक है, तो वो वॉलंटरली में आ जाएगा. या उसने जो मीन्स एम्प्लॉय करे हैं उससे देयर इज रीजंस टू बिलीव और ही न्यू कि ये कॉन्सिक्वेंस में ये एक्ट कमिट होगा ही होगा. देन वी से दैट द पर्सन हैज वॉलंटरली कमिटेड एन एक्ट. ठीक है, दिस वाज द प्रिंसिपल गिवन टू अस. The facts are Sandy stops a moving train by chain pulling by night in the middle of nowhere for the purpose of facilitating a robbery. Sudden stoppage of a train causes problem to many people. One of the passengers, Ramu, died during such stoppage as no medical facility were available at that place. Sandy knew, ठीक है, सैंडी न्यू दैट सच स्टॉपेज विल कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज डेथ, injuries, etc. to the people. However, Sandy had no intention to cause death and is sorry that the death was caused by his act. What do you think? What will be the correct answer over here? युक्ति, प्रिंसिपल बस ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन वॉलेंटरली कब एक्ट कमिट करता है, ठीक है, तो उसने इंटेंशन के साथ वो एक्ट कमिट किया हो या उसने ऐसा कुछ काम करा हो जहां उसके पास नॉलेज थी कि ये पर्टिकुलर एक्ट कमिट हो जाएगा, या उसके पास रीजंस टू बिलीव थी कि इस तरीके का एक्ट वो जो भी मीन्स एम्प्लॉय कर रहा है उससे कॉज होने वाला है. देन वी से दैट द पर्सन हैज वॉलंटरली कमिटेड द एक्ट. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? Will it be A, B, C, or D? Yes. So the correct answer over here will be option A. That he is guilty as he knew
that such stoppage will cause problems of various types such as death, injuries, etc. to the people. देखो यहां फैक्ट में दिया हुआ था that सैंडी न्यू कि ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई अगर नॉलेज है कि ऐसी कोई घटना आपके एक्ट की वजह से हो सकती है, तो ये कहा जाएगा आपने वॉलंटरली वो एक्ट कमिट किया है। तो क्योंकि सैंडी को यहां पे पता था कि लोगों की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द स्टॉपेज, या लोगों को इंजरीज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉपेज, उसके बाद भी उसने उसको ट्रेन को स्टॉप किया। अब जो भी डेथ कॉज हुई है या इंजरी कॉज हुई है लोगों को, ये कहा जाएगा कि सैंडी ने खुद वॉलंटरली वो एक्ट कमिट किया है। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन ए। देखो, जिन लोगों को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है ना, दैट इररिस्पेक्टिवली ऑफ हिज नॉलेज, अब इररिस्पेक्टिवली ऑफ हिज नॉलेज बोल दोगे तो आप कैसे कहोगे कि उसने इंटेंशनली ऐसा कुछ काम करे जिससे लोग मरे। या तो उसने इंटेंशनली लोगों को मारा हो, तो हम कहेंगे उसने वॉलंटरली किया है। यहां उसने इंटेंशनली तो किया नहीं। सेकंड चीज, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई या तो नॉलेज होनी चाहिए या रीजंस टू बिलीव होनी चाहिए। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि ही इज गिल्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट सच स्टॉपेज विल कॉज प्रॉब्लम्स। अब अगर नॉलेज इंप्यूट कर ही नहीं सकते हो आप उस पर, या नॉलेज उसके पास है ही नहीं, तो आप कैसे कहोगे कि उसने वॉलंटरली काम किया है वो वाला। देयरफॉर ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो फ्रेज लिखा हुआ है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, भाई नॉलेज तो इंप्यूट करनी पड़ेगी उस पर, क्योंकि प्रिंसिपल की वो रिक्वायरमेंट है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस वाज ऑप्शन ए। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्रिंसिपल इज every citizen of India has a fundamental right to carry on any trade, business of or profession of his choice, subject to the imposition of reasonable restrictions by the state। तो प्रिंसिपल हमसे ये कह रहा है कि भाई हर सिटीजन, वही जो हमारा आर्टिकल 19(1)(g) में हमारे पास फंडामेंटल राइट है ना, दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस। बट ये राइट एब्सोल्यूट नहीं, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि भाई राइट एब्सोल्यूट नहीं है। चलो, द फैक्ट्स आर environmental pollution is a growing concern in the 21st century. In pursuance of an order passed by the Supreme Court of India, the government of Delhi bans all motor vehicles using diesel engine which do not conform to the norms set by the Ministry of Environment. Raghuvar Motors, an auto dealer, challenges the ban as it violates his right to carry his business. What do you think? What will be the correct answer over here? What should be the correct answers? Yes. So the correct answer over here will be option B, that the ban is justified as the right of Raghuvar Motors to carry his business is not absolute. देखो, अब प्रिंसिपल ने या एग्जैक्टली अभिनव, है ना, प्रिंसिपल ने ये बोला कि भाई उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अब हम बस ये समझ के चलेंगे इतने से प्रिंसिपल से जो हमें दिया हुआ है कि भाई वो राइट एब्सोल्यूट तो नहीं है। बाकी इंफॉर्मेशन हमें हमारी फैक्चुअल सिचुएशन देगी। फैक्चुअल सिचुएशन ने यहाँ बोला कि भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने सारी चीजें बैन कर दी जिन भी मोटर व्हीकल्स में डीजल इंजन था। तो क्योंकि राइट इन इटसेल्फ एब्सोल्यूट नहीं था, उसको रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। So therefore, the correct answer in this question will be option B, that the ban is justified as the right of the Raghuvar motor to carry his business is not absolute। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर if the act by which the death is caused is done with the intention of causing murder of the person। ठीक है, यही वो हमारे सेक्शन 300 का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कोई भी पर्सन गिल्टी होगा, अ पर्सन विल बी तनिष्क। अगर क्लियर कट बैन भी लगाया है ना, तो अब ये नहीं प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बट प्रिंसिपल में ये चीज जरूर दी हुई है कि भाई वो राइट इन इटसेल्फ एब्सोल्यूट नहीं है ना। तो स्टेट अगर उस वक्त एब्सोल्यूट बैन भी लगा रहा है ना, तो हमें वहां पे वो जस्टिफाइड ही लगेगा, क्योंकि राइट इन इटसेल्फ एब्सोल्यूट नहीं है।
प्रिंसिपल अगर ये कहता कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे आप एब्सोल्यूट बैन नहीं लगाओगे, तो हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो। So the principle of this question is basically saying that a person is guilty of culpable homicide to murder amounting to murder अगर उसने एक्ट, जिस एक्ट से डेथ कॉज हुई है, वो एक्ट इसी इंटेंशन से किया है कि सामने वाले की डेथ हो जानी चाहिए। So the act which has resulted into the death of the person must have been done by the person with the intention to cause death. तभी आप उसको कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल करोगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। नाउ द फैक्ट्स गिवन टू अस इज कमलू was suffering from a common cold and viral fever and Pappu knew about the same. On the same day, during a heated argument on issue of cold coffee, Kamlu slapped Pappu. कमलू ने पप्पू को थप्पड़ मार दिया गुस्से में, इन एंगर। Pappu lost his self-control and dealt a blow on Kamlu's head with wallet, and as a result, Kamlu died. तो भाई कोल्ड कॉफी को लेके लड़ाई होने लगी। कमलू ने कमलू ने पप्पू को थप्पड़ मारा गुस्से में। पप्पू ने उसके बदले कमलू के सर पे वॉलेट मारा, है ना, वॉलेट मतलब ये अब अपना पर्स, वॉलेट मारा उसने। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? वेदर इट विल बी ऑप्शन ए, बी, सी और डी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? Yeah, so the correct answer over here will be option C. That Pappu was not liable for murder as he did not do so with an intention to kill Kamlu. उसने वो जो वॉलेट मारा है वो उसने इस इंटेंशन से नहीं मारा है कि हम सामने वाले को मार ही देंगे, है ना। तो वो इंटेंशन टू कॉज डेथ गायब है एक्ट में से। सो द एक्टस रियस एंड द मेंस रिया आर मिसिंग। मेंस रिया वहां पे एक्टस रियस के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। देयरफॉर कमलू विल नॉट बी हेल्ड लायबल एंड द करेक्ट आंसर ओवर देयर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज negligence. Principle is negligence is failure in taking reasonable care to avoid acts or omission which one can reasonably foresee which would be likely to injure some other person. वही जो हमारा नेग्लिजेंस का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई नेग्लिजेंस क्या है? वो रीजनेबल केयर को आप नहीं ले रहे हो, है ना। फेलियर टू टेक द रीजनेबल केयर, जिसकी वजह से, और रीजनेबल केयर उन एक्ट्स के लिए जिनको आप रीजनेबली फोर्सी कर सकते हो, which would be likely to cause effect or cause damage to the other person. That is the concept of negligence. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फैक्ट्स पे। फैक्ट्स आर Neelu was a 20-year-old young biker. He was fond of sports bike. He used to perform stunts at a busy and a crowded place to attract the attention of crowd. One day, while he was performing a racing stunt in a marketplace, he lost his control over his bike and accidentally hit Mr. Janist, a 60-year man who was trying to cross the road. He suffered grave injuries and has been hospitalized. Which one of the following is correct as to the liability in the law of torts? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? अब नीलू मार्केट प्लेस में तेज गाड़ी चला रहा है, स्टंट कर रहा है मार्केट प्लेस में, बिजी रोड्स में, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पीपल। एंड ऐसे ही किसी एक मार्केट प्लेस में एक दिन स्टंट करते वक्त उसने उसने मिस्टर जानिस्ट का एक्सीडेंट कर दिया। सो ऑब्वियसली बात है, ये तो क्लियर कट एग्जांपल है हमारे पास नेग्लिजेंस का, कि वो रीजनेबल केयर आप मार्केट प्लेस में स्टंट परफॉर्म करते वक्त कैसे रख सकते हो, है ना। सो द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर आया हमारा ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द लीगल प्रिंसिपल गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज अ माइनर is not competent to enter into a contract and the law will assume that the contract never happened and everything will be restored to its original position. प्रिंसिपल क्या है कि भाई माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा देन द लॉ विल अज्यूम कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, बट जो भी कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो चुका होगा उस चीज को रिस्टोर भी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉ यही अज्यूम करेगा कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ नहीं, सो एवरीथिंग व्हिच वुड हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट विल बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
ये हमें प्रिंसिपल ने दिया। ठीक। सो द फैक्ट्स आर, संजय, a minor, fraudulently misrepresented his age and entered into a contract with Salman for the delivery of a car. After the car was delivered, Sanjay refused to make the payment, asserting that there exists no valid contract between the two, and also refused to return the car. Now, Salman sued Sanjay. What do you think? What will be the correct answer over here? What will be the correct answer over here in question number 7? प्रिंसिपल की दोनों चीजों को याद रखना कि भाई माइनर कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। सिमिलरली जो भी चीज की गई होगी उस चीज को रिस्टोर भी किया जाएगा। says that the rule of last opportunity means that he who had the last opportunity of avoiding an accident, notwithstanding the negligence of other, is solely responsible. नेग्लिजेंस में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, वही ये प्रिंसिपल है कि भाई सामने वाला पर्सन भले ही नेग्लिजेंट हो, बट अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, then you are the only person responsible for the damages which would have happened over there, है ना? So the correct answer of question number 7 is बच्चा option A, that the contract is not valid because a minor is incompetent to enter into a contract and the minor may be directed by the court to return the car. ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग रिस्टोर भी की जाएगी। चलो, सो प्रिंसिपल क्लियर है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, भले ही सामने वाला नेग्लिजेंस हो, पर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल गिवन टू अस। द फैक्ट्स आर, लल्लू, अच्छा सा नाम है, लल्लू हैड अ बुलक कार्ट एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली यूज्ड टू राइड ऑन इट। One afternoon, Lallu's son Pappu was proceeding on the cart towards the Jamunanagar Mandi. When he reached near the Mandi called Bahadurganj, he got down from the bullock cart and went to eat samosa towards the left side of the road. ठीक है? At the very same time, a motorcycle driven by Jansi Lal was coming from the left side direction, wrong side, opposite to where bullock cart was standing. When the motorcycle neared the bullock cart, the bull suddenly jumped on the road from where motorcycle was approaching, resulting in an accident. Jansi Lal was hit by the bull and got injured. What do you think? What will be the correct answer over here? किसके पास थी यहाँ पे लास्ट अपॉर्चुनिटी? What do you think? Who had the last opportunity over here? Whether Jansilal is liable or whether Jansilal is not liable or whether Pappu is liable or whether the bull is liable. Bull का भी एक option है हमारे पास. What do you think? So the correct answer of question number 8 will be option A. That one is correct. Wrong side से कौन आ रहा था? एनिमल तो हो नहीं सकता, तो चौथा वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट गया, है ना? अब जंसीलाल और पप्पू के बीच में देखते हैं, भाई लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी यहाँ पे? लास्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे जंसीलाल के पास, क्योंकि वही रॉन्ग साइड से आ रहे थे। पप्पू नेग्लिजेंट था। जब वो बुलेट कार्ट को रोड पे खड़ा छोड़ के चला गया तो पप्पू तो नेग्लिजेंट हो चुका था, बट आखिरी अपॉर्चुनिटी इस चीज को अवॉइड करने के लिए थी जंसीलाल के पास, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहे थे। सो यहाँ पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जंसी लाल की। सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन ए। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person shall be liable to compensate for the damage caused by his servant in the course of employment। हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, एंड ये वाइकेरियस लाइबिलिटी ना बहुत ट्रिकी होता है, यहां हमारे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? A person will be held liable to compensate for the damage caused by the acts of his servant done in the course of employment। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर सर्वेंट ने कोई गलती की है तो मास्टर को लाइबल किया जा सकता है। आर क्लियर कट प्रिंसिपल ऑफ vicarious liability, है ना? So let's look at the facts. The facts are, BHEL, a public sector undertaking in Bangalore, has a contract with
Bangalore Transport Service, where under a few BTS buses were are exclusively used to transport BHEL employees during particular hours every day. During this time, the BHEL drivers would drive the bus, but the bus would prominently carry a board only for BHEL employees. On a given day, the BTS bus, after dropping the employees at the factory, was getting back to the BTS garage so that it would be available for the regular BTS services. It was still carrying the board only for BHEL employees. Shankar, a bystander waiting for BTS bus to go to a particular palace, got into the bus and paid rupees 10 to go to a palace which is on the way to the garage. On the way, due to the driver's negligence, the bus met with an accident and Shankar suffered injury. What do you think? What will be the correct answer over here? Whether it will be option A that Shankar can't recover damages, B again Shankar can't recover the damages, or C that Shankar cannot recover the damages. What do you think? What will be the correct answer over here? The correct answer in question number 9 is option C, that Shankar cannot get damages from the BHEL or BTS since the driver was not in the course of in their employment in so far as he allowed Shankar to get in. The answer will be option C. देखो C क्यों? बीएचईएल बीटीएस वो ड्राइवर, वो बस किस चीज के लिए रखी गई थी? वो बस रखी गई थी, उनका एम्प्लॉयमेंट का पर्पस क्या था? टू टू ट्रैवल और फेरी दी एम्प्लॉयज ऑफ बीएचईएल. सो उनका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था बीएचईएल के एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वापस गैराज में जाना. बट सिर्फ उस बस में किसको ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया गया था? बीएचईएल एम्प्लॉयज को, है ना? तो ड्राइवर का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था सिर्फ बीएचईएल के ड्राइवर्स को इधर से उधर ले जा, बीएचईएल के एम्प्लॉयज को इधर से उधर ले जाना. द मोमेंट दिस ड्राइवर अलाउड अनदर पर्सन टू एंटर इनटू द बस, वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जा चुका है. वो उस चीज के लिए नहीं अलाउड था, या वो उस काम को करने के लिए अलाउड नहीं था. Therefore, the correct answer will be option C, that the Shankar cannot get damages from BHEL or BTS since the driver was not in their employment insofar as he allowed Shankar to get in. उसने पैसे लिए, सब कुछ लिए, वो मैं मानने को तैयार हूं, बट वो एम्प्लॉयमेंट का पर्पस क्या था? एम्प्लॉयमेंट क्या था? बीएचईएल के एम्प्लॉयज को फेरी करना. तो आप द मोमेंट आप किसी और को अगर फेरी कर रहे हो या लिफ्ट दे रहे हो ना, नाउ यू आर एक्टिंग आउटसाइड द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. So therefore, the correct answer in question number 9 will be option C. चल, now we will solve certain questions of legal aptitude. ठीक है? प्रिंसिपल फैक्ट के भी हमने क्वेश्चन करे, अब हम कुछ लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ स्टेट लॉ is reserved for the consideration of the president and has received his assent, which is the competent authority to override such a law? ऐसा कोई भी लॉ जिसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व किया गया एंड उसे प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया, इस तरीके के लॉ को ओवरराइड कौन सी अथॉरिटी करेगी? ए द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, बी द पार्लियामेंट, सी द गवर्नर, और डी नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10? थिंक अबाउट इट. Yes, the correct answer in such a case, the correct answer in such a case is option B. ये चीज ना रिलेटेड है हमारी आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. आर्टिकल 254 हमें यही बताता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ है स्टेट का जिसको रिजर्व किया गया है फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द लॉ हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, then in such a case such law can be overridden by any act of the parliament. ठीक? तो 10th का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी. Let's move to the next question. The next question is,
What is the tenure of the Chief Election Commissioner of India? A, 5 years. B, during the pleasure of the President. Or C, 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Or 5 years or till the age of 62 years, whichever is earlier. What is the correct answer in question number 11? कितना टेन्योर है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? Yes. The correct answer is option C. The tenure of the chief election commissioner in our country is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. जो भी पहले हो, चाहे 6 साल पहले हो या 65 years of age पहले हो, टेन्योर उनका यही होता है ना? So the correct answer in this case is option C. Let's move to the next question. Now the next question is a bit difficult one. ठीक है? It says no demand for grant is to be made except on the recommendations of A, Prime Minister, B, President, C, Finance Minister, or D, Comptroller and Auditor General. It's a bit difficult one. Think about it. What is the correct answer over here? On whose recommendation demand for grant are made? Prime Minister, President, Finance Minister, or Comptroller and Auditor General? A very good job, guys. The correct answer is the President. है ना? जो आर्टिकल 113 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी बारे में। ठीक है? आर्टिकल 113 एंड में आके यही बताता है कि भाई डिमांड फॉर ग्रांट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं किए जा सकते। सो जिसने इस क्वेश्चन का प्रेसिडेंट मार्क किया था आंसर, यू कैन टैप योर बैक बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट वन। ठीक? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Let's move to the next question. The next question is, who is the head of, it's a bit simple one, who is the head of Council of Ministers, which is constitutionally obligated to aid and advise the President of India? A, leader of the ruling party, B, Speaker of the Lok Sabha, C, Prime Minister of India, or D, Law Minister of India? What is the correct answer in question number 13? Yes. The correct answer in question number 13 is it is the Prime Minister of India. So the Article 74 of the Indian Constitution talks about the Council of Ministers, है ना? एग्जीक्यूटिव के बारे में वो बात करता है एंड आर्टिकल 74 में ये स्ट्रेट अवे लिखा है that there shall be a Council of Minister which is to be headed by the Prime Minister of the country to aid and advise the President of India. So the correct answer is question number 13 का correct answer is option number C, that is the Prime Minister of India. चलो, let's see another question. Now this is related to your current legal knowledge, current legal update का question है. So the question is, on 6th of January, the draft regulations for foreign universities or other higher educational institutions setting up campuses in India have been published by A, the University Grants Commission, B, the Ministry of Law and Justice, C, Department of Legal Affairs, or D, none of the above. So what is the correct answer over here? Question number 14. Yes. Correct answer in question number 14 is option A. सो यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जनवरी में एक नोटिफिकेशन निकाला था, रेगुलेशन निकाला था, जहां उन्होंने बताया था कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अपने कैंपसेस अब इंडिया में खोल सकती हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ बिट स्लाइटली टुवर्ड्स बीइंग अ बिट डिफिकल्ट वन. ठीक है? ये रिसेंटली एक केस हुआ था, उसके ऊपर क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एक्स आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स
and enabling their free public access violates the provision of code of criminal procedure, as it compromises the rights of the accused, victim, and the investigation agencies. X is defined under section 173 of CRPC and is the prepared by final report prepared by a police officer or investigative agency after completing their investigation of a case. X is A, investigation report, B, police report, C, FIR, or D, charge sheet. What do you think? What is the correct answer over here? What was the particular document जो recently सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा था कि भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है ना, ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता. So what is the correct answer over here? Yes. The correct answer in this case is D, charge sheet. जब पूरा देखो, जब किसी भी केस की कंप्लेंट होती है, जब किसी भी केस की कंप्लेंट होती है तब वहां पे एक एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है ना, और वो जो फाइनल रिपोर्ट वो कोर्ट को सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम चार्ज शीट. एंड चार्ज शीट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में कहा था कि दिस इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन डी. चलो, let's move ahead and let's see the next question. So the next question is dash dash is the act of withholding or withdrawing medical treatment, such as withholding or withdrawing life support with the intention of allowing a person to die. It is a kind of a simple question. A, active euthanasia, B, passive euthanasia, C, euthanasia, or D, none of the above. So what do you think? What is the correct answer over here? In question number 16? Yep. So the correct answer in question number 16 is it is passive euthanasia. है ना. जब आप विड्रॉ कर लेते हो लाइफ सपोर्ट को या आप विथहोल्ड कर लेते हो लाइफ सपोर्ट को विद द इंटेंशन टू अलाउ अ पर्सन टू डाई. ठीक है. जब आप किसी पर्सन को अलाउ करते हो ना फॉर डेथ, वो यूथेनेशिया होता है. अब यूथेनेशिया एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है. विथहोल्डिंग ऑफ लाइफ सपोर्ट को कहा जाता है पैसिव यूथेनेशिया, है ना. सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन बी. चलो, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. In which of the following judgments the concept of absolute liability was introduced for the first time by the Supreme Court of India? Absolute liability का concept Supreme Court ने किस केस में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ऑप्शन ए इज यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, सी एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997, और डी वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस केस में आया था और किस ईयर में आया था? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? Yes, the correct answer in question number 17 is MC Mehta versus Union of India 1987. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के पहले सारी चीजें हमारी कंट्री में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल से मैनेज की जाती थी. बट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की डॉक्ट्रिन को प्रपोज किया था, उसको इन्वेंट किया था, अपने जजमेंट का पार्ट बनाया था. तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1987. Chalo. Let's move to the next question. The next question, again, a pretty simple one from our constitutional law. The question is, a person whose fundamental rights are violated can move the High Court. Okay? Can move the High Court under A, Article 20, B, Article 226, C, Article 32, or D, Article 22. What is the correct answer in question number 18?
फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में हम हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर जाते हैं? हम हाई कोर्ट जाते हैं अंडर आर्टिकल 226. The writ jurisdiction of the High Court is given under Article 226 and Article 32 हमारा रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाह रहा है तो वो आर्टिकल 32 में करेगा. बट अगर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में के केस में कोई पर्सन हाई कोर्ट अप्रोच करना चाह रहा है तो वो अप्रोच करेगा अंडर आर्टिकल 226. ठीक है, चलो. Let's move to the next question. The next question is, it's also a bit moderate or difficult in its nature. The next question is, the quorum, the quorum for meeting of the House of People constitutes A, 1/10 of the total member, B, 1/10 of the total members or 100 members, whichever is less, C, 1/3 of the total member, or D, 100 numbers. What is the correct answer over here? In question number 19, देखो, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए. पहले हम समझते हैं कोरम क्या होता है. ठीक है, कोरम बेसिकली एक मिनिमम स्ट्रेंथ होती है जिसके बिना हाउस की कोई भी मीटिंग या सिटिंग की नहीं जा सकती. सो इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द सिटिंग ऑफ द हाउस. ठीक, अब जो आर्टिकल 100 है ना हमारा, आर्टिकल 100 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 100 बेसिकली यही चीज बताता है कि हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा या राज्यसभा के लिए हमें कोरम के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत होगी. एंड आर्टिकल 100 में ये साफ साफ लिखा हुआ है दैट द कोरम शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर प्रेजेंट. सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन ए. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस इज अगेन अ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. लेंदी क्वेश्चन है. लेंदी क्वेश्चन इंटेंशनली इस वजह से इसमें डाला गया है क्योंकि हो सकता है हमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड में लेंदी क्वेश्चन भी मिल सकता है जहां 2 से या 3 से ज्यादा प्रिंसिपल दिए हो, है ना? सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फर्स्ट. द प्रिंसिपल इज, nuisance is an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. If the interference is direct, the wrong is trespass. Whereas if the interference is consequential, it amounts to nuisance. Nuisance क्या है भाई? अनलॉफुल इंटरफेरेंस है किसी और पर्सन की उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसके राइट्स हैं उसके साथ. अगर इंटरफेरेंस डायरेक्ट है, अगर इंटरफेरेंस डायरेक्ट है तो वो चीज ट्रेसपास हो जाएगी. बट अगर इंटरफेरेंस इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है मतलब कॉन्सिक्वेंशियल है, आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो जिससे इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस अब हो रहा है, तो वो चीज न्यूसेंस में आती है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. द सेकेंड प्रिंसिपल इज, nobody shall make use of his property in such a way as to cause damage to others. Any such use constitutes private nuisance, a wrongful act under law of torts. ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल हमसे बस यही कह रहा है कि भाई आप इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे कि किसी और को डैमेज हो. डैमेज हो मतलब वही इंटरफेरेंस हो. अगर आप कर रहे हो तो आप न्यूसेंस कमिट कर रहे हो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. द थर्ड प्रिंसिपल इज, अ पर्सन इज लायबल if he can reasonably foresee that his acts would likely to injure his neighbor. अब देखो, थर्ड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है. थर्ड प्रिंसिपल हमें ये बताता है एक पर्सन लाइबल होगा न्यूसेंस के लिए अगर वो फोरसी कर सकता है, अगर वो रीजनेबली फोरसी कर सकता है कि उसके एक्ट से उसके नेबर को डैमेज होगा, तभी पर्सन लाइबल होगा. दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल. एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज, द फोरसिएबिलिटी of the type of damage is a prerequisite of liability in actions of nuisance. वही हमारे थर्ड प्रिंसिपल को और जस्टिफाई करके हमारा फोर्थ प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि भाई ये जो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है ना कि सामने वाले को डैमेज हो सकता है, दिस इज अ प्री रेक्विजिट इन केसेस ऑफ, फॉर केसेस और लाइबिलिटी इन एक्शंस ऑफ न्यूसेंस. ठीक है, सो ये हमारे चारों प्रिंसिपल थे.
Now let's look at the facts. The facts are Alina and her husband purchased the house next to a religion X temple. एलिना और हस्बैंड ने एक घर खरीदा है, एक टेंपल है विच बिलोंग्स टू रिलीजन एक्स उसके बाजू में. यूजुअली Usually, the religion X temple is a peaceful place and has no record of hosting public religious gatherings. For the first time in the history, the temple hosted a festive religious proceeding under the guidance of Swamiji. Thousands of people visited the temple to take blessings from Swamiji, resulting into massive road traffic, hawkers stall put across the main road, and high volume speakers installed by the temple. Aggrieved by the same, Elena filed a case of nuisance against the religious ex-temple authorities. The temple authorities took the defense of plaintiff being aware of the temple premises and consenting to the same decide. केस समझ में आया? ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए मैं फैक्ट्स दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं. भाई फैक्ट्स ये हैं कि एलिना और उसके हस्बैंड ने एक घर खरीदा रिलीजियस एक्स टेंपल के बाजू में. टेंपल का रिकॉर्ड था कि आज तक कभी भी उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की नहीं थी, तो वो एक पीसफुल प्लेस थी या पीसफुल टेंपल जैसी जगह थी. अब स्वामी जी की गाइडेंस में एक रिलीजियस प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है. हजारों लोग आते हैं, ट्रैफिक भी रुक जाता है, हॉकर्स भी बहुत सारे हैं, एंड हाई वॉल्यूम पे गैदरिंग में प्रोसीडिंग्स भी चल रही. स्पीकर्स लगाए गए हैं हाई वॉल्यूम के साथ. अब एलिना न्यूसेंस का केस फाइल करती है अगेंस्ट द रिलीजियस एक्स टेंपल अथॉरिटीज. टेंपल अथॉरिटीज ये क्लेम करती हैं कि भाई इनको पता था कि बाजू में टेंपल है, तो इन्होंने कंसेंट कर दिया था इंटरफेरेंस के लिए. एंड नाउ वी हैव टू डिसाइड. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? What will be the correct answer in question number this particular question number 20? So the correct answer in question number 20 will be option B and not option A. Will be decided in favor of defendant, तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि देखो भाई न्यूसेंस तो हुआ है ना. अब बात आती है ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा. बी ये कह रहा है द मैटर विल बी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिव एज डिफेंडेंट कुड फोरसी द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द हाई वॉल्यूम स्पीकर्स एंड मैसिव रोड ट्रैफिक. ठीक है. अब ये देखो, फोर्सिएबिलिटी की बात हमारे प्रिंसिपल में भी की गई थी ना, कि अगर रीजनेबली फोर्सिएबल डैमेज है तो भाई पर्सन न्यूसेंस के लिए लायबल हो जाएगा. अगर रीजनेबली फोर्सिएबल इंटरफेरेंस है तो पर्सन न्यूसेंस के लिए लायबल होगा. ऑप्शन ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फैक्ट के बेसिस पे रिप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. नॉलेज को लेकर हमारे प्रिंसिपल ने कुछ भी बात नहीं की थी. एंड हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल बेस्ड आंसर लगाने की. अनलेस इट इज अ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आंसर, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल बेस्ड आंसर लगाने की. सो प्रिंसिपल बेस्ड आंसर कौन सा हमारा, ए है या बी है? हमारा प्रिंसिपल बेस्ड आंसर है ऑप्शन बी. सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन बी, that the matter will be decided in the favor of the plaintiff as defendant could foresee the nuisance caused by high volume speakers and massive road traffic. ऑब्वियस बात है, अगर आप हाई वॉल्यूम स्पीकर्स लगा रहे हो तो आप फोर्सी कर सकते हो कि किसी ना किसी को तो डिस्टरबेंस होना ही है ना. तो इसलिए वो लायबल भी होंगे. एंड करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी. चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्रिंसिपल इज वंदना, आई डू नॉट टेक द क्लास एवरी डे ऑन वाईटी. रोज वाईटी पे मैं क्लास नहीं ले रहा होता हूँ, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती. वाईटी पे रोज नहीं होती क्योंकि आपका पेपर पास में आ रहा है, इसलिए वाईटी पे एक सेशन रखा गया था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. चल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल इज अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी
and its acceptance by another with the intention of establishing legal relation is an agreement. ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है कि भाई ऑफर ऑफर अगर प्रपोजल एक पार्टी ने किया है और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, तो वो चीज एक अग्रीमेंट होती है। ये हमें हमारे प्रिंसिपल ने बताया। नाउ द फैक्ट्स आर, Savita sees a camera for rupees 15,000 in the display of a shop. She went inside the shop to buy the camera, but the shopkeeper refused to sell it. Now, Savita sues the shopkeeper for misleading her by keeping the camera in the display. What do you think? What will be the correct answer? Will she succeed or will she not succeed? I'll give you the tips. Average kid, हम एंड में इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। Let's look at this question. So the correct answer will be in question number C. Question number 27 will be option C. That Savita will not succeed because the shopkeeper kept the camera in the display for purposes of inviting the customers who will then make an offer to the shopkeeper. Remember हम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होते, ऑक्शंस किस चीज में आते, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड ऑक्शन आते हैं हमारे इनविटेशन टू ऑफर में, है ना। एंड इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि अब आप ऑफर दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूंगा वो मेरी मर्जी है। मैंने अगर डिस्प्ले पे गुड रखे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने ऑफर दिया आपको, है ना, वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। So therefore, the correct answer in this case, in this particular question, will be option C. ठीक है। सो आज के सेशंस के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अब मेरा एक सजेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर लीगल एप्टीट्यूड, कि लीगल एप्टीट्यूड में हम क्या क्या पढ़े। तो देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। आर्टिकल्स पे भी हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सिमिलरली लीगल मैग्जिम्स, है ना, लैटिन मैग्जिम्स जो हमारे लॉ में होते हैं, हमें वो भी याद करना। एंड फॉरेन फ्रेजेस एंड फॉरेन टर्म्स। सो ये सारी वो चीजें हैं जो लीगल एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं ओलिट के एग्जाम्स में। सो लीगल एप्टीट्यूड हम वहां से कवर करेंगे। तो आई गेस अभी काफी टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम अभी बचा हुआ है हमारे एमएचसीटी के पेपर के लिए। तो अगर आप लोगों ने, इफ यू हैव नॉट स्टिल स्टार्टेड अबाउट डूइंग योर legal aptitude, so you may start doing it as soon as possible. तो ये तो बात हुई लीगल एप्टीट्यूड की। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की। तो देखो, एक सिंपल सा अपना रूल बना लो, ठीक है, कि मुझे जो भी प्रिंसिपल दिया होगा, मुझे अपने प्रिंसिपल के हिसाब से ही आंसर देना है, ठीक है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी आंसर चूज करने के लिए होनी चाहिए प्रिंसिपल वाला ऑप्शन, ना कि फैक्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सो वी हैव टू स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द ऑप्शंस व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। क्लियर है? एनी अदर डाउट? चलो, सो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप ये सब चीजें कर लेना। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेशन, आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, प्रैक्टिस हुई होगी, क्लैरिटी आई होगी कि ऑप्शंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। अच्छा, एवरेज किड, हाँ मैं आपको रिप्लाई करना भूल गया। सी, इफ यू आर न्यू टू दिस एग्जाम ना, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट। क्लैट के लीगल रीजनिंग के जो पास्ट ईयर पेपर्स होते थे ना, 2018-19 से पहले, वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस के बेसिस पे क्वेश्चंस आया करते थे। सो आप प्रैक्टिस करने के लिए वो यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको ये सारी चीजें कवर करनी होगी फॉर योर एग्जाम। चलो, सो विद दिस we'll end our today's session.
I'll see you again with some other session, maybe some other topic, maybe with your legal awareness series. Till then, have a good day, a very good night to all of you, and I wish you all the best for your exam and along with तबीयत का ध्यान रखना है, ठीक है? मौसम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, अभी तबीयत नहीं खराब करनी है अपनी, पेपर आ रहा है अपन लोगों का, ठीक है? चल, so a very good night to all of you. With this, I'll take your leave. See ya. Bye bye.